If you are a hijabi or a niqabi like me and you always find it difficult to make your hijabs, then I have come up with some of these very essential 3 hacks that will always be very useful for you guys as a hijabi. Hi everyone, I am Nigam Qureshi and today I'm going to show you guys these 3 very basic hijab hacks that will literally change your life. I have these beautiful hijabs from the Hijab company, and you guys must know that Hijab company is one of the leading modest fashion brands in Pakistan. So here is the hack number 1. I am using this hijab from the Hijab company. ये इनके शिफॉन के हिजाब्स हैं which has great texture. ये सर से slip नहीं होते. The fabric is amazing. It's very lightweight. Plus fabric के textured होने की वजह से it won't slip that easily. तो इस हैक के लिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ पिन्स. मैंने यही आपको दिखाना था कि इफ़ यू आर समवन लाइक मी हु हेट्स द फील ऑफ हैविंग टू मच पिन्स ऑन द हिजाब, देन यू कैन यूज़ फैब्रिक टेप्स. अभी मैंने इस हिजाब को फैब्रिक टेप से सेट किया है एंड यू कैन सी दैट हाउ सीमलेस माई हिजाब लुक्स. एक भी पिन नहीं यूज़ हुई इसके अंदर एंड लुक हाउ अमेजिंग दिस हैक इज़. Now for the hack number 2, I am going to use the same hijab fabric और इसका मैं लेंथ वाइज जो पल्लू की साइड है वो अपने सर पे लेके रखूँगी और उसको पीछे की तरफ टाई कर लूँगी. मैं इससे एक हिजाब कैप वाला लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सेम मैचिंग हिजाब कैप्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एंड वी ऑल आर जस्ट हैविंग अ वेरी बैड हिजाब जिसके अंदर बाल स्लिप हो रहे होते हैं और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं. तो इसलिए आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं. इसके बाद बस मैंने इसकी पल्लू वाली साइड को अपने सर पे वापस डाला और उसको पिन अप कर लिया. एंड लुक हाउ सीमलेस इट लुक्स. कोई हिजाब कैप इसके अंदर यूज़ नहीं हुई बट स्टिल इट गिव्स एन इफेक्ट कि आपने एक मैचिंग की हिजाब कैप पहनी है विच लुक्स अमेजिंग एंड वेरी नीट. नाउ फॉर द हैक नंबर 3, आई एम अगेन यूजिंग द सेम फैब्रिक फॉर द हिजाब. मैं इसको अपने सर पे रखूँगी एंड आई एम जस्ट सिंपली वेयरिंग दिस हिजाब. नाउ इस हैक के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्ट्रेटनर फॉर प्रेसिंग माई हिजाब्स एंड टू स्ट्रेटन द क्रीसेस. आपको अपने हिजाब में कोई क्रीज बनानी हो या जो ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है, इसको अगर आपने सेट करना, यू गाइस कैन ईजीली डू इट बाय जस्ट यूजिंग अ स्ट्रेटनर. प्लस आप इसको ट्रैवल करते हुए भी ईजीली कैरी कर सकते हैं. So this was it for today guys. If you guys liked this video then make sure to hit a thumbs up and subscribe to this channel. You can head over to the website which is www.hijabcompany.pk.